are the key gaps that HR teams see today between academic learning and industry ready skills in fresh graduates. So आप क्या कहना चाहते हो इस चीज? They are coming with is the confidence. First thing, जो carry कर रहे हैं, that is good, but all don't have such type of confidence. So first I will say about it. Hello guys, once again I'm over here for you, all of you. Let's start with the very much awaiting podcast series, Clini Talks by Clini Hunt. Today we are having our special guest, Miss Isha Parmar. She is basically the head HR of Accord Group of Companies. So let's welcome her to this particular podcast and let's understand how unsolved questions are there from the mind of freshers which are staggering around the HRs. So let's have it, and I welcome you, Miss Isha, for this particular podcast. I would love to know more about you as well as the Accord Group of Companies. So can you just brief us more onto that part, that what exactly your company does, and how you land up your job into this particular? Okay, so yes, before talking किसी भी चीज़ के लिए, so first I want to say thank you to Clini Hunt and you for inviting me here, as it is the first podcast I am ever doing. So talking about my thing, I am working as an head HR in Accord Group of Companies, and where Accord Group stands for 4 companies: Avron, Objective, Core Clinical Services, and DGX Learning Solutions. So Avron Infotech is an IT-related consulting company where we do consulting-related services in the HR field and all. Second goes the Core Clinical Services, which is an IT healthcare company. We work in many domains like healthcare summarization, clinical data management, and related to summaries, we are working with US and UK-based clients currently. Talking about our third company is the Objective Solutions. And in Objective Solutions, we basically do the IT development related things of third party projects also, and the projects which we have currently of ours also. And DGX is an IT type of learning institute where we provide different courses for IT development, like many languages, and we have expertise in .NET language currently. Wow. So yes. That's a really great pool of companies you are working with, Yes. Miss Isha. So definitely, as there are 4 group of companies, you are engaging different sort of talents. You are engaging the IT graduates as well as the life sciences graduates, Right. pharma graduates, medicos. Everything is involved in this. And obviously, as you know, being a part of Clini Hunt with our placement services, with the training services, I received a lot of questions from many of the freshers. Okay, so in today's podcast, we would love to know more about the perspective of hiring the new talents in a company. What sort of challenges HR basically are facing, because till date this thing was there, काफी सारे क्वेश्चंस होते थे फ्रेशर्स के, सर हमने अप्लाई तो कर दिया बट वी आर नेवर रिसीविंग एनी ऑफ द रिस्पॉन्स. We are sending mails, we are sending the LinkedIn requests, we are sending the messages, everything to the HR, but ultimately none of them are getting the responses from the HR. So I'm having a couple of questions jotted down for you. So let's start with the first question. Yes. So mostly I would love to know about this, that what are the key gaps that HR teams see today between academic learning and industry ready skills in fresh graduates. So आप क्या कहना चाहते हो इस चीज के ऊपर particularly? Okay, so it is a very good question. So it have many of the points I have to discuss about it. So first हम ऐसे बोलेंगे कि whatever they are expecting from the industry and whatever skills they have is like have a total difference. So पहली thing ये होगी कि whatever they are coming with is the confidence. First thing, जो carry कर रहे हैं, that is good, but all don't have such type of confidence. So first I will say about it.
And second, we will go with the unrealistic expectations, which I have the most strongest point कि एक expectations होती है जो वो carry करते हैं right from taking the admissions in the colleges, right from the peer, right from their family and all. So जो भी expectations वो carry करते हैं in the academics, it is going to be real in whatever they are going to work. वैसे ज़रूरी नहीं है हर टाइम. सो फर्स्ट थिंग इज स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप कंपेयर करोगे कि मेरे फ्रेंड को इतने टाइप का पैकेज मिला है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एवरी टाइम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस. सो यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, you have to focus on what you have to be. First, try to be clear in your life what you want to do, go in that domain, and if you will do it, I think everyone will do well. And talking about the thing which we were going is, जैसे expectations अगर आप realistic रखोगे, so that will help you to grow. Second is अगर आप eligible भी हो रहे हो interview के लिए, if we will expect कि भाई हो गया eligible हो गया वो किसी चीज़ के लिए, so after getting eligible you have to show the professionalism. प्रोफेशनलिज्म वो पढ़ते हैं, बट दे डोंट अप्लाई व्हेन दे कम फॉर द इंटरव्यू और वट एवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन. सो आई थिंक देर आर द 3 points: द कॉन्फिडेंस, द प्रोफेशनलिज्म प्लस द एक्सपेक्टेशन. दे शुड कीप रियल rather than taking it academic to the things. So I think HRs यही expect करते हैं कि ये चीज़ें अगर उनके लाइफ में लाए better, so we will get a good pool of candidates. Moving ahead with the next question, Isha. So I definitely see nowadays that LinkedIn is a platform जहाँ पर a lot of HRs they post on their requirements. Right. Okay. Obviously, it's one of the best platform to cater a real good candidates who are who are following some sort of professional ethics, I must say. Yes, absolutely. Now, I have seen this, that a lot of people they post a lot of job opportunities. A lot of companies, the HR teams, they post job opportunities in the LinkedIn. But I have seen the other side, that is a lot of students are actually applying on that particular job roles, but that are in a large number. Right. Okay, so this might have happened with you, Miss Isha, कि आपने कोई post डाली, let's say for 10-20 candidates requirement, and you might have received 1,000-1,500 applications. Okay. Yes. अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर लार्जर वॉल्यूम की. लेट्स सपोज इफ समवन so this I have seen with a lot of HR, like when they post the requirement, उनका मेल बॉक्स पूरा भर जाता है. Right. So what are your experiences from this particular point of view, and how you cater to this large volume, how you screen them, what are your key points, what things you do to compete with the बहुत सारे लोग होते हैं जो लिंक्डइन पे कनेक्ट करते हैं. वी ट्राई टू रिस्पॉन्ड देम, बट एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी कैंडिडेट के प्लीज सेंड योर रेज्यूमे, देन वी विल चेक एंड वी विल yes, we check each and every resume, but freshers should keep in mind that if you are eligible, then only the HR will reach out to you. If you are applying 100 times on the same mail with the same resume with the same description copied from the ChatGPT, इवन आई हैव सीन दिस थिंग कि कैंडिडेट्स कंपनी का नाम भी नहीं चेंज करते हैं. जो लास्ट कंपनी में उन्होंने रेज्यूमे दिया था विद द मेल डिस्क्रिप्शन, सेम मेल डिस्क्रिप्शन मेरे पास आया है. माय गॉड. सो पीपल आर नॉट टेकिंग एफर्ट्स. इफ अच्छे से आप एफर्ट्स लोगे, इफ यू विल गिव दिस थिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर अप्लाइंग इन अवर कंपनी फॉर मेडिकल समराइजर पोजीशन, सो दे विल गिव द सेम मेल विद द डिटेल्ड अटैच्ड their resume that I am applying in a medical summarization position in not core clinical, in any XYZ company. My God. So I literally feel कि थोड़ा तो कष्ट ले लो, because it is showing that how casual you are for finding the job, or it shows your personality that how eager you are for the thing. So I think थोड़ा focus से चीज़ें करनी चाहिए, and applying 100 times will not help you get shortlisted for the thing. You have to build your resume in that way कि आप shortlist हो जाओ. Avoid keeping some things like your photos and each and everything in your resume which make you look a bit underconfident, or we can say less professionalism. So some points they should go with. ATS friendly रखो, बिकॉज बहुत सारे हम ऐसे करते हैं कि वी यूज़ बोथ द वेज. वी यूज़ द मैनुअल ओनली, बिकॉज ATS हमेशा सक्सेसफुल
राइट नहीं है, राइट? Okay. क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनके पास टैलेंट होता है, बट ATS डोंट हैव दैट थिंग, राइट? दे शॉर्टलिस्ट और दे रिजेक्ट सच टाइप ऑफ कैंडिडेट्स. Okay. तो बहुत बार ऐसे हुआ है कि जो ATS ने जो शॉर्टलिस्ट किए है वो गलत भी निकला है, जिन्होंने उनको रिजेक्ट किया है वो कैंडिडेट आज हमारे साथ 1 साल से काम कर रहे हैं. Okay, wow, So that is something new. Yes, so we think कि दोनों चीज़ों करनी चाहिए. So it takes some time. If you are applying, at least a week you should wait for the response. If not, then try to reach the proper channel. Okay. कि ये HR है तो आप उसी को कांटेक्ट करके पूछो, बिकॉज बहुत बार ऐसे हुआ है कि पीपल ट्राई टू टॉक विद सम डिफरेंट कंपनीज, बिकॉज लिंक्डइन पे होता है कि कनेक्शन में बहुत रिपोस्ट करते हैं लोग. Exactly. एंड समटाइम दे सेट द अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो सच में होते नहीं है, जो हमने एक्चुअली एज अ HR पोस्ट नहीं किए होते हैं. Okay. सो रीचिंग द राइट पर्सन फॉर वॉट एवर डाउट्स यू हैव विल बी द बेस्ट थिंग. सो आई फील कि अगर आप अच्छे हो तो आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा. तो फर्स्ट क्राइटेरियाज इज, as I have told you, manually भी हम करते हैं. We use some automatic things also like ATS friendly applications and all. फिर if you are a good candidate then obviously we are reach out to you. फिर उसमें भी steps होते हैं. We have some criterias on which we shortlist. If we are looking for freshers then we have other. If we are looking for experience then certain experience, what experience they have. Each and every criteria we go through. Talking about the freshers now, yes, their graduation, whatever is mentioned, each and everything matters. Fine. So mostly, I want to know, Isha, out of this, like, you know, as you have told me, like कि ये हमारे screenings होते हैं इस हिसाब से. So this is a really lovely thing, which definitely I should say this thing to you guys that, you know, अगर Accord group of companies में कोई भी बंदे अपने CVs भेज रहे हैं, तो definitely it will be getting screened. This is what Obviously. I can see from my, you know, point of view. As you have mentioned that, you know, you check out when you take time to, you know, review all of the Yes. CVs, because this is really a great thing which you guys and your team is doing, Isha. Because I have seen with couple of companies that they never respond and then they never get any sort of callback. So it's a really good and humble thing which you did. Second thing, let's talk about the funny part over here, Isha. As you said, like, you know, students ये mistakes करते हैं while applying the CVs and all, like, you know, for this particular profile. So this also happens कई बार कि like you have posted the requirement, आपने LinkedIn पे डाली, you have mentioned that आपको जो आपके CVs है वो either you have to you know mail on this particular mail ID. Still, does it happens कि when you post the requirement and the next day a lot of people gather at your office for the interviews? Yes. This happens. So Yes. what are your such kind of experiences? I would just Yes. would love to know more on that. Yes, a lot of time it have happened. ऐसे होता है कि ऑफिस टाइमिंग से पहले ही a group of people come and sit there, and बहुत बार ऐसे होता है कि figure out हम कर ही रहे होते हैं कि किसके लिए आए हैं, because we have 2 to 3 floors of our office. True. So किस फ्लोर पे आए, हमारे लिए आए, ये फिगर आउट होने तक जब पता चलता है कि दिस पूल ऑफ कैंडिडेट इज फॉर आर. सो ऑफिस में आते ही ये सब चीज़ें वी आर नॉट रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग्स, राइट? सो यस, बट हमने ट्राई किया है कि हमेशा हम कभी भी ना भेजें, बिकॉज ऐसे ही, बिकॉज होता है कि हो सकता है कि उसमें कोई अच्छा हो इंसान एंड रियली वो उस जॉब के लिए देख रहा हो. सो वी डोंट फील रिजेक्टिंग लाइक दैट. वी कलेक्ट देयर CVs and then we call them afterwards whenever we have the openings. So बहुत होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है. एंड द थिंग इज कि तभी भी आई थिंक थोड़ा बिहेवियर उनको ऐसे रखना चाहिए, बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस से बोलूँ कि वो अगर एक बार आके रुक गए, दे डोंट इवन हियर, दे आर नॉट इवन रेडी टू हियर कि मैं बोल रही हूँ कि आप रेज्यूमे देख के जा सकते हो, दो दे विल कॉल वट एवर द कंसर्न पर्सन हैव सेंड देम. सो ऑब्वियसली इट इज़ देयर पार्ट, दे विल कॉल, बट होता है कि आप एक प्रोफेशनलिज्म ये करो. अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो आई थिंक कि सुनना चाहिए, बिकॉज इफ आई एम वेटिंग, लिटरली आई वॉज वेटिंग फॉर 5 minutes कि वो कुछ रिस्पॉन्ड करे फिर मैं ऊपर जाऊँ. दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग. 10 मिनट उनका ग्रुप डिस्कशन चला. आई डोंट नो व्हाट इट वाज. ऑलरेडी आई केम एट 9, आई वॉज लेट दैट डे एंड ऑल दिस थिंग्स हैपन. सो हाँ, होता है, बट आई थिंक कि थोड़ा अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स से सब चीज़ें करके आओ, एक आधा इंसान, इफ़ नहीं तो आप कॉपरेट करने की कोशिश करो, बिकॉज मैनेजिंग a 30 people at the time in the morning is not True. easy, because अगर आप And that too suddenly. suddenly, right? So because planned हो तो obviously we have such type of management, we have such type of tests for managing all those people, but suddenly होता है तो
yes, it is a kind of shocking thing. Okay, lovely. So I must again appreciate you on this part, Miss Isha, that ऐसा तो नहीं है एटलीस्ट विच मल्टीपल कंपनीज जिसकी चलो ठीक है आपने सीवीज ले लिया एंड यू आर नेवर गोना कनेक्ट देम. Okay, so that is really lovely part of your team, I must say, Isha. Yeah. So let's moving ahead with the next question. I have always seen this that बहुत सारे students ऐसे होते हैं who are really good in their academics. किसी का 9 CGPA है, किसी का 8 CGPA है. Some of them are the college toppers. ये भी आते हैं इंटरव्यू देने के लिए. But some of the reason they even don't get shortlisted. And there are some other category of the participants, applicants, जिनका academics is okay, average, maybe below the average, but they are getting selected in the industry. So what you want to say on this particular part? तो ऐसा तो क्या है कि वो फेल कर जाते हैं, those students who are good with their academics still they fail in their interviews. Okay. सो पहली चीज़ मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं. वी विल से द वर्ड इंट्रोवर्ट बिकॉज कि उनको आता सब कुछ है बट दे आर नॉट इन द वे दे कैन एक्सप्रेस. सो इंटरव्यू में बहुत ऐसे होता है कि एकेडमिक में वो अच्छे होते हैं, देयर स्कोर इज़ गुड, वेन एवर दे गिव द रिटन टेस्ट दे आर गुड, बट वाइल टॉकिंग विद द HR दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट और दे डोंट नो हाउ टू टॉक अबाउट इट. कम्युनिकेशन भी बहुत लोगों का ऐसे होता है कि हाँ दे स्कोर गुड but their communication is not that good. So some of the part or some of the skill they lack because of which ये चीज़ें होती है. And talking about the other person कि जो distinction में है या फिर only have passed the things but though they do the thing, क्योंकि ऐसे होता है कि they have the skill of learning. ऐसे नहीं कि डिस्टिंक्शन वाले या फिर जो एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं उनमें नहीं होते, बट दे ऑल्सो हैव अ टाइप ऑफ एटीट्यूड दैट दे नो एवरीथिंग because they are topper in the college, right? So they have such type of attitude that I know everything. Abhi tak I am the topper, so I will be the but it is not the thing. Whatever you are learning and whatever reality check you are getting in the work is totally different. The mentors which you have in colleges, schools were different. The mentors you will have here will only guide you, will not spoon feed you. Okay. So this thing I think they should understand. So यही है कि try to keep yourself down to earth if you are that good. And because बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि for example मैं बताती हूँ कि अभी ही last week का incident है. She was the topper. Okay, wow. You will not believe, in 12th she had 98. In science 12th she had 90. Wow. She had done B pharmacy and 9.8 was her CGPA. My God. Her communication was also good. But before calling for the interview, each and everything was cleared. ऐसे salary रहेगी, ये हमारे terms and conditions होता है. She was okay with everything. After coming for interview, she got selected and we were okay because सब चीज़ें अच्छे से बताई गई थी. After the interview, when we asked her, you are ready to join? Because obviously all the things are explained before. True. Only. Then she was like, कुछ negotiation का part है क्या? Oh, though she was a fresher. Okay. So I was very humble at that time कि no, we don't have a negotiation part because each and everything was mentioned. Then she was like a bit in an attitude कि ऐसे कैसे negotiation तो होना चाहिए. I was a school topper, I was a college topper. So if you are a school topper, you are a college topper, what thing you have to prove that you are also good in the industry? Do you have such experience? No, right? Exactly. Right? So for this thing, at least you have to prove yourself for 2 to 3 months, then we will think about it कि हम सोच सकते हैं उस बारे में. Okay. But according to marks, we don't. Exactly. We cannot, right? Correct. क्योंकि हो सकता है कि जो 60% वाला इंसान है वो तेरे से परफॉर्म अच्छा कर जाए. Exactly. So we cannot give prior commitment. So people should understand that if life में वो first हमेशा रहे हैं तो आगे भी रहेंगे. It is not that type part. Time changes, each and everything changes. Exactly. So they have to prove themselves. You have to upgrade yourself for keeping that topper in your life again. So wow. Focus on yourself. That's absolutely lovely, Miss Isha, because this thing happens, as you say, वो जो attitude problem होता है कई बार with some of the good candidates.
So it should be there, but again, they should be aware of the reality of the market as well. They should be confident, but not the over one. Overconfident, Yes. right? Absolutely, absolutely. That's really explanation by you, Miss Isha. Moving ahead with the next question, which is really a big problem into the market. Okay, I've been connected with multiple HR people, HR managers, recruitment specialists, वगैरह वगैरह. So I've seen one major issue, that is primary reasons basically for the fresher talents who are joining the companies. उनका ना attrition बहुत जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा होता है. Right. They join, couple of weeks they leave the company, couple of months they leave the company. तो what do you think इसके primary reasons क्या है कि वो इतने जल्दी back out कर जाते हैं? Okay. What sort of your observation onto this part? Okay, so the first point I would like to add is the comparison part. अच्छा, कि okay. अगर तुम कंपेयर कर रहे हो खुद को कि सपोज कोई भी एक इंसान है, उसको जॉब लग गई, दे आर डूइंग वेल इन योर, बट बाद में उसको क्लिक होता है कि हाँ मेरे फ्रेंड को भी एक लगी है विद अ गुड पैकेज, डबल डन माई पैकेज, वॉट एवर कैन से. सो एक कंपटीशन हो जाता है कि उसकी कंपनी में तो ऐसे है, मेरी कंपनी में ऐसे नहीं है. देन दैट पर्सन सजेस्ट जॉब हॉपिंग. Correct. सो उनका एक कंसेप्शन होता है कि ठीक है 1 साल है ना, कर लेता हूँ, फिर जॉब हॉप कर लूँगा, जिससे सैलरी भी बढ़ जाएगी, आई विल गेट अ गुड पोजीशन, विच इज़ नॉट ट्रू एवरी टाइम, राइट. True. हर टाइम आपको एक अच्छी इंक्रीमेंट मिले, एक अच्छा परसेंटेज मिले वाइल जॉब हॉपिंग इज़ नॉट ट्रू. ओके, अगर आपके स्किल्स होंगे देन ओनली यू विल गेट. सो द थिंग इज पीयर प्रेशर में आना इज़ द लेवल ऑफ अट्रैक्शन करेंटली ग्रोइंग. कि फ्रेंड्स का तो ये है, फ्रेंड्स ने ये ज्वाइन कर लिया तो मैं भी कर लेता हूँ, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, मुझे भी मिल जाएगी. घर वाले बोल रहे हैं कि फ्रेंड को तो इतना लग गया, तुझे कैसे नहीं लगा. सो आई थिंक समहाउ आई फील कि पीयर प्रेशर जो है उनका, कल्चरल बोलो, फैमिली रिलेटेड बोलो या फ्रेंड्स रिलेटेड बोलो, जो भी है, इट इज़ द रीजन ऑफ द रिटेंशन. सेकेंड वी विल टॉक अबाउट द अगेन पीयर प्रेशर के अंडर ही कंपनसेशन वाला पार्ट आता है. Okay. ओके, सो वही जैसे मैंने बोला कि सैलरी वगैरह जो होती है उनको फ्रेंड की ज़्यादा है, और ये अगेन कम्स दी एक्सपेक्टेशंस कि जॉब ज्वाइन करने से पहले उनको ये लगता है कि ये रोल हमें बताया है, सो दैट रोल विल बी स्पेसिफिक ओनली. Correct. कि मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी, सो आई हैव टू वर्क ओनली On ऑन that दैट. part. आई विल व्हाट वी कैन से बैलेंस माई वर्क एंड लाइफ. बट उसके लिए खुद को उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ऑब्वियसली वी विल ट्रेन यू. अवर ट्रेनिंग थिंग इज दैट कि अगर किसी को ट्रेन कर दिया देन देर आर 99% चांसेस कि कोई भी फ्रेशर ग्रूम हो जाता है. Oh, is it? इट इज़ इन दैट पार्ट. Wow. सो कोई उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है. बट द थिंग इज़ कि अगर एक बार आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, सो आफ्टर ट्रेनिंग आई फील कि थोड़ा बहुत ओन इनिशिएटिव का पार्ट होता है जो फ्रेशर्स करने के लिए रेडी नहीं है. सामने वाला बोल रहा है इतना दिया है, चलो चलो घर पे. इट इज लाइक दैट कि हो रहा है, इतना काम है, हो गया काम, चलो घर पे. Right. And So they then they have that expect- attitude that Yes. इतने सैलरी में तो इतना ही मिलेगा. इतना ही boss. मिलेगा. इतना ही मैं काम Yes. करूंगा. I'll be going to my home. Yes, and I'll yes, yes. And after a certain time they expect कि अभी तो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए ना, साल भर तो काम कर लिया. So it is not like that. You should show your initiatives. You should glow up in a group of people जिससे आपको मिले इंक्रीमेंट. So I think कि हाँ, जॉब हॉपिंग करने से खुद को कंपेयर करना बंद कर दो, जॉब हॉपिंग करना बंद कर दो, which will help you to grow. Focus on yourself. Don't focus on compensation for the first 2 years. Correct. I too do feel that कि सीखो, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उतना सीखो, जिससे ज़्यादा गाइडेंस ले सको उससे लो. वर्क लाइफ बैलेंस 2 साल मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट आफ्टर दैट यू शुड, compensation is also important. Everyone have to survive, right? Everyone have to make money. True. So compensation is also that important. But for 2 years you have to forget it if you want to grow in this industry. That's really lovely thing you said, Isha. Because यही सारी चीजें जो होती है जो उन्हें डाइवर्ट करती है. And that is why they get this dilemma यार,
उसके कंपनी में तो यू नो ही इज गेटिंग दिस मच ऑफ पैकेज, सैटरडे संडे भी ऑफ है, यू नो ही इज Right. हैविंग अ ऑफिस इन अ पॉश एरिया लाइक you know this Balewadi High Street and Bane and Hinjewadi Right. and sort of thing, pick up drop facility है. So they get amazed by this, but they don't look from the other way around, that how much experience you are getting, Right. what quality of work you are getting, what sort of multitasking you are doing. ये सारी चीजें भी उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट Yes. मुझे दिखाई देती है यहाँ से. Yes. Okay. And one more thing I want to like to add कि अगर फ्रेंड को कोई बड़ी कंपनी लग रही है तो मैं भी बड़ी कंपनी में ही ट्राई करूँ. आई डोंट फील लाइक दैट. True. इफ़ यू आर द एट द इनिशियल स्टेज, तो मुझे लगता है कोई भी फ्रेशर अगर कोई स्मॉल स्केल कंपनी या मिडिल स्केल कंपनी से स्टार्ट करेगा तो ही और शी विल हैव अ गुड एक्सपोजर, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें इनिशियल स्टेज को से हमको करने मिलती है. राइट फ्रॉम द person who is engaged in this thing plus till the management, each and everyone is in under our guidance. Right. Each and everyone is there to guide us. Right. कि कोई भी देख लो, मैनेजर देख लो, सीईओ देख लो, if we are in under a middle type of company, Correct. बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है. सो आई थिंक कि बड़ी कंपनीज में अप्लाई करना इज नॉट बैड, बट इफ़ यू वांट टू ग्रो, इफ़ यू वांट टू अपग्रेड योर स्किल्स इन सच अ वे, सो ट्राई टू गेट अ middle company which will help you to get good things, good exposure, and then you can think about your skill and all, and then you can grow, and then you can apply the big companies. Lovely. Over here, I just want to ask you one question, Isha. Jesse, you said, like, you know, people are more tend towards the multinational companies and all. ऐसे कौन से की पॉइंट्स है कि जो फ्रेशर ग्रेजुएट है उसे आपकी कंपनी से मिलेगा, एंड विच इज अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस एमएनसीज? व्हाट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट? आइदर वन और टू, बट यू नो कि हाँ ये चीज आपको यू नो मिड सेगमेंट कंपनीज में ही मिलेगी सीखने को, एंड दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर देम एज अ फ्रेशर. व्हाट आर दिस पर्टिकुलर थिंग्स? Okay, so talking about the first thing is the skills development. If you will apply in any MNC company, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा. इफ आप सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल एज अ क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हो, तो पर्टिकुलर स्टेप्स जो क्लिनिकल ट्रायल में कंडक्ट किए जाते हैं आपको उतनी ही चीज़ें दिखाई जाएंगी, आपको उतनी ही चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आपकी ट्रेनिंग में होगी. बट इफ़ यू विल अप्लाई इन अनदर कंपनी, इफ़ यू आर गुड, इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल, तो आप राइट फ्रॉम द कोर टिल it's what we can say end-to-end thing you can work. You will get a good exposure, you will work with different people, if you will have a good contact with the seniors से रोज डिस्कशन होगा, CEO से होगा, मैनेजर से होगा, डायरेक्टर से होगा, which will help you to learn a lot, which will help you to grow a lot. So ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. एंड आफ्टर ट्रेनिंग भी ऐसे होता है कि हमारे जो भी मिडिल टाइप ऑफ कंपनीज है, आफ्टर ट्रेनिंग ऑल्सो दे गेट द गाइडेंस. कंटिन्यूस लर्निंग होता है, कंटिन्यूस गाइडेंस मिलता है उनको. लर्निंग का पार्ट बोले तो इफ दे आर लर्नड इन द डिफरेंट प्रोजेक्ट, दे हैव एक्सपोजर ऑफ डूइंग द डिफरेंट थिंग्स. राइट. अगर इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल सीख लिया और दिख रहा है कि हाँ ये इंसान मेडिकल कोडिंग सीख सकता है, obviously we will teach him the medical coding, right? But वहाँ ऐसे नहीं होता है. They are, if you are chosen for one thing, right from day one till you resign, you are going to work on same project only. Only you will get the promotion, not the exposure, not the thing which you are going to learn for, or the new skills which you are looking for. So guidance होता है, training होता है, जैसे मैंने बोला सीखने को बहुत मिलता है if you will keep up at the compensation. That's really lovely, Isha. Absolutely. So let's moving ahead with our next very interesting question. That is, I have seen this thing with various of applicants, okay, because we do train a lot of students on you know segments of clinical trials, data management, US healthcare market research, etc. तो कई बार होता है, you know, we send them for the interviews, and somehow obviously this is a new practice nowadays that you know we check the company you know work culture, we check the premises, we check the Glassdoor reviews कि how the company is, how the work culture over there is, यहाँ पे कोई on floor politics होती है या नहीं होती है, वगैरह वगैरह. So what do you think, what are the misconceptions mostly all of these freshers are having while joining the company? Okay. So while joining the company, misconception बोले तो उनको लगता है कि सब चीज़ें चिल रहेंगी जैसे उनके कॉलेज में थी. So which is not true. Obviously there will be fun जितना कॉलेज में होता था, but
see, companies are here to make money, right? Correct. They are here to give you money. Correct. And if you will perform, then only you will get it. True. Right? So fun is the part. Fun obviously हर company में होता है, but if you want to have a good compensation, then you have to contribute in that. For example, I will say there is an IT healthcare company. Last week उनके कैंडिडेट्स या फिर एम्प्लॉयज़ जो भी थे, उनके अच्छे परफॉर्मेंस नहीं हुआ, उसके वजह से ऑलमोस्ट दे हैव द टीम ऑफ 11,000 प्लस पीपल, एंड My नाउ God. ऑलमोस्ट 6 से 7,000 उन्होंने ले ऑफ कर दिए. Shit. सो My God. फन और कैजुअल एटीट्यूड भारी पड़ गया, ऐसे हम बोल सकते हैं. सो द थिंग इज कि if you will focus on the things which are assigned to you and then you will have fun, obviously no problem, right? True. But ये चीज़ें अगर आप करोगे कि कैजुअल था, स्कूल में असाइनमेंट सबमिट नहीं की, चलो चलता है, यहाँ पर डेडलाइन है, चलो और 2 दिन आगे चली जाएगी, क्या होता है? It is not going to work like that. True. Right? So giving the things seriousness, taking less casualty will help कि ये सब चीज़ें ना हो. Let's moving ahead with the next question, Isha. Very interesting question of mine. ये बहुत बार होता है. A lot of candidates either don't appear for the interview just because of this one thing, or either वो काफ़ी ज़्यादा मुझसे बातें करते हैं कि यार सर ये पॉइंट हटा दो तो everything is good. That is the bond. Okay. So I have seen this particular questions coming from a lot of students that सर अप्लाई तो करना है, कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन 1 year का बॉन्ड कह रहा है. So what do you want to say? Why companies have such kind of bonds? And why should they follow this particular bond practice? Because nowadays a lot of companies are moving ahead with this system. They're going ahead with the bond. So what you would love to say on this part, Isha? Okay. So talking about the commitments or the bonds, they have the difference. First, we have to understand about it. Bonds are the things which we cannot break, or there is a certain type of compensation you have to pay for it. And talking about the commitment, there is something you are keeping for security or a little amount of thing which you have to compensate. So the thing is very different. If bonds and commitments are different, and commitment करना I don't think it is bad, because ये आजकल कंपनीज, जैसे आपने बोला कि बहुत सारी कंपनीज ये मांग रही है, because this generation have the attitude of job hopping. So it is like कि ऑलरेडी कंपनीज बहुत सारी ऐसी होती है जो कमिटमेंट देती है प्रोजेक्ट्स के लिए, दैट सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज, सर्टेन नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर गोइंग टू वर्क फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑन दिस प्रोजेक्ट. सो अगर उनके पास ही सिक्योरिटी नहीं है कि कैसे कैंडिडेट्स हम कितने टाइम के लिए रखेंगे, देन हाउ दे आर गोइंग टू टेक दैट प्रोजेक्ट. So first thing is that, and talking about from the candidate's perspective, you are a fresher. You have to survive, you have to prove yourself in the market. अगर 2-3 महीने से जॉब चेंज करके अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे, दैट HR और दैट कंपनी विल थिंक 100 times बिफोर टेकिंग यू, राइट? सो इट गिव्स यू द जॉब सिक्योरिटी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. करेक्ट. आपके लिए अच्छा है कि आपको एक टेंशन नहीं कि भाई 1 साल तो मेरी जॉब कहीं नहीं जाएगी, राइट? यू शुड थिंक विद दैट पर्सपेक्टिव. आई थिंक कि ये मेरे से कमिटमेंट ले रहे हैं या फिर ये कमिटमेंट ले रही है, जो भी है. सो आई डोंट फील कि इस पर्सपेक्टिव से सोचने से सब चीज़ें सॉर्ट होंगी. इफ़ यू आर गेटिंग द जॉब सिक्योरिटी, एक सर्टेन टाइम के लिए आपको एक अच्छा सब सोर्स मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ पर्टिकुलर इनकम फॉर अ सर्टेन टाइम. सो आई थिंक कि ये एक सिक्योरिटी चीज़ बिल्ड करता है. सेकेंड थिंग इज़ द ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी रखता है ये सब चीज़ों में. अगर हम पहले ही ये सब चीज़ें बता दें कि हम ये पर्टिकुलर पीरियड का हम आपसे कमिटमेंट लेने वाले हैं, और फिर अगर वो इंटरव्यू के लिए नहीं आ रहे हैं, दैन इट्स टोटली फाइन. आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है. सबका ओन पर्सपेक्टिव रहता है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, राइट? सो बट आई हैव द इशू कि आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, आप सिलेक्ट हो रहे हो, एंड इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट कमिटमेंट निकल सकता है क्या? सो आई थिंक इट इज़ नॉट गुड. अगर पहले ही सब चीज़ें ट्रांसपेरेंटली रखी गई है, देन आई डोंट फील कि ये क्वेश्चन फिर से रेज होना चाहिए. यू शुड डिस्कस विद योर फैमिली एंड ऑल. यू शुड गिव योर थिंग टू फैमिली कि हाँ
ये है, ऐसे ऐसे है, आई विल गेट अ गुड ट्रेनिंग, आई विल गेट थिंग्स टू लर्न, आई विल गेट अ गुड कंपनसेशन फॉर अ पर्टिकुलर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. और कन्विंस करने की बात जब तक रहती है तो मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ें हम ट्रांसपेरेंट रखें उनके साथ तो बेटर रहता है. सिर्फ कम्युनिकेशन वर्बली नहीं, इफ़ यू विल शेयर इट विद द मेल ऑल्सो देन इट विल हेल्प देम टू clarify with the parents, because बहुत सारे parents are very insecure about all these things कि कुछ हो गया तो ये सब चीज़ें दे तो रहा है, what if they will not return it. So अगर ये सब चीज़ें अपन स्टैम्प पे या फिर अच्छी चीज़ों पे कर रहे हैं, लाइक लीगली ये सब चीज़ें अगर हो रही है या जो भी प्रोसेस होता है उस पर अगर ये हो रहा है तो आई डोंट थिंक कि इस सब चीज़ों से कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए. एंड कमिटमेंट वगैरह जो होता है, कंपनी के रूल्स होता है, फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न होता है, आपकी कंटिन्यूटी के लिए होता है, हमारे प्रायर कमिटमेंट्स बेस पे होता है. सो वो चीज़ें हटती नहीं है. सो इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद ये चीज़ें पूछना आई थिंक इज़ नॉट वैलिड. True. So just for my reference, Isha, let's suppose अगर आपने let's suppose 50 कैंडिडेट स्क्रीन किए हैं, तो what do you think is the ratio कि 50 में से कितने एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं who are ready or who are okay with this bond thing? Approx. It will be 8 to 9. 8 to 9 only. 8 to My 9. God. So this many voluntarily rejections are there from the हाँ. applicants. ओनली जब आफ्टर चीज़- हियरिंग कि कमिटमेंट है, बाकी की My चीज़ें नहीं God. सुनी है, ओनली My आफ्टर God. हियरिंग कि कमिटमेंट है. That is huge. यस, इट इज़ वेरी ह्यूज. Okay, but the really lovely thing is that which you said, Isha, that you are somehow giving them the job security, राइट. which is very, very, very important part into the current market scenario, Right. where we are seeing IT companies are firing a lot of employees. They are taking them on contract basis for the 6 month. Even top-notch companies, I can't say the names, but definitely there are some top-notch companies who are hiring on the contract basis system. Once you will complete 6 months, after that you don't know whether you are going to go. Right. So it is really lovely, efforts your company is taking, Isha, that they are providing 1 year of bond system. And candidates, definitely you should think from this perspective as well. If you are a fresher mostly, and company is taking you for a 1 year of bond practice, then definitely it will be much helpful for you to gain that 1 year of experience. That is Yes. really lovely part. And in that 1 year, you will get the compensation, good compensation, we can Exactly, say. You will get the exactly. job security, you will get the training, you will get the thing which you want to do. True. So I don't think कि एक साल में इससे ज़्यादा और कोई expect कर सकता है. That's really lovely. So Isha, my next question is, बहुत बार applicants are missing on this point that they didn't got the perfect mentorship, let's say onboarding or continuous learning support. किसी ने उन्हें guide ही नहीं किया. So do you think you encounter such kind of applicants जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका आगे का pathway क्या है? You might be asking them a lot of questions during the interview. Right. कि where you would love to see you after this many years. So ऐसा होता है कई बार that people are just blank, they don't know anything कि यार आगे करना क्या है, बस अभी job चाहिए, that's why they are in front of you, that's it. So does this thing happen? Yes, this happened a lot of time. हाँ, नहीं होती है लोगों को क्लैरिटी, बिकॉज उन्हें एक मेंटोर नहीं मिला होता है, वी कैन से, जिधर से भी उन्होंने कॉलेज किया है, जहाँ पे भी वहाँ पे स्कूलिंग हुई है, दे डिडंट गेट दैट पाथ, या फिर उनको लाइफ में कुछ और करना होता है, बट लाइफ टेक्स देम टू द अनदर पाथ, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें उनको क्लियर नहीं होती है. सो येस, दे आर लुकिंग फॉर अ करेक्ट मेंटोरशिप, एंड इफ़ दे विल गेट, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि दे विल लुक और डू गुड. सो टॉकिंग अबाउट आवर कंपनी, सर एंड मैम हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड सच पीपल कि कुछ स्पार्क लग रहा है, वी कैन गिव देम अ चांस. Wow. Though it is a commitment basis, we can give them a chance. We can think कि हाँ, कोई होता है कि they are not able to show their talent, but they have, we can also feel that spark कि हाँ नहीं, अगर इसको सिखाया तो ये कर सकता है, थोड़ा है आगे पीछे बट कर सकता है. So sir and ma'am have always appreciated such type of people, and because of both of them I am also appreciating such type of people. Wow. कि हाँ, we will give the chance. If it work well, then obviously it becomes the asset. And आज हमारे यहाँ पे 2 से 3 लोग ऐसे कि they are the best, we can say, employees of our company, जो हमने ऐसे ही सोच के लिए है कि हाँ,
which they didn't know कि हमको ये चीज़ करनी है, but yes, they worked very well, they are working very well, they are good assets, working as an asset in our company currently. Does communication plays an important role? Yes. Is it? Yes. Let's suppose if someone is there with bit of 50% okay with the communication skills, which is into the English language. So, what do you think about those kind of candidates? Okay. So talking about English, yes, I feel that each and every person should know English, basic English, that how you are, what you should like what you are trying to tell about yourself. So basic English each and every company expects, because if you are working in such a great domain, if you are working with the US and UK projects, if you are working on summaries, pharmacovigilance, English terminologies, physiologies are the basic things a person should know, Correct. right? If academics से चीज़ें अलग आ गई and if आपको English ही नहीं आती है, then how are you going to type that thing, right? So correct. English is the most important thing. Yes, it matters, but हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको English बोलना नहीं आता है, but they understand, they grasp the thing very quickly. If उनको एक concept एक बार बता दी जाती है, they never make mistake in that. But it is like कि जैसे आपने बोला कि एक ग्रास के ढेर में से सुई ढूंढना, इट इज लाइक दैट टाइप ऑफ पार्ट, कि वैसे कैंडिडेट्स ढूंढना और वो क्वालिटी पता करना कि हाँ ये इंसान कर सकता है विदाउट नोइंग इंग्लिश इज वेरी रेयर. एंड येस, पीपल डू. दूसरे डोमेन से भी लोग करते हैं कि ये कोर्सेज करने के बाद आफ्टर डूइंग द फार्माकोविजिलेंस एंड अदर कोर्स फ्रॉम द डिफरेंट डोमेन्स आल्सो, दो दे आर नॉट अ फार्मेसी graduates, though they do very well. I have seen such type of people also, that BCom BSc graduated doing courses in such healthcare domains. They are working very well, they are working in medical coding as a top asset of their company. So knowing English is not that, but हाँ, आज के मार्केट के हिसाब से देखें तो you should know English. That's really transparent, Miss Isha. So let's suppose अगर ईशा को कोई कैंडिडेट्स हायर करने हैं, what will be the 5 key points you have in your process कि भाई ये 5 चीजें मुझे अगर बंदे में दिखी, then definitely I'm from his side and like from his or her side, and we are going to take them on roll. So what are these 5 key points to crack your interview? Okay. So the first thing is your attitude or approach. The way you sit, the way you talk matters for me a lot. कि आप कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो बोलने के टाइम, उससे ही पता चल जाता है कि हाउ कैजुअल और सीरियस द पर्सन इज फॉर दिस इंटरव्यू. True. If he or she is making faces while giving the interview, it shows कि किसने तो घर वालों ने या किसी कंपनी ने या इंस्टीट्यूट ने मार पीट के भेजा इसलिए आ गया इंटरव्यू के लिए, राइट? सो ये एक फर्स्ट पॉइंट इज द एटीट्यूड. सेकेंड कम्स फॉर मी इज द skill of learning, or the way he is or she is understanding the things, or the way he or she is interested in learning the things. If ऐसे है कि मैंने बता दिया कि we are hiring for access, like we can say medical summarization XYZ position, so what do you know about this thing? If that person is ready with the answer that yes, this is the thing, medical summarizers do this thing, and तो कि हाँ वो interested है. Perfect. If that person is no, I don't know what is medical summarization, which I feel is not bad. True. But if you are going for medical summarizer interview, you should know exactly that what you are going for. So बहुत बार ऐसे होता है कि candidates आ तो रहे इंटरव्यू के लिए, बस किस रोल के लिए आए वही पता नहीं है. So this is again a weak point, which is not that bad, but which is considered as a kind of bad. So the second thing is you should be prepared for what you are saying, and third thing I feel is the confidence. Okay. तुम जो भी बोल रहे हो, it doesn't matter कि वो कितना सही है कितना गलत है. It matters कि आप कितना सही से उस चीज़ को सामने वाले को ये कर रहे हो कि सामने वाला उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो, या फिर वो चीज़ें एटलीस्ट सुने कि आप क्या बोलना चाह रहे हो. अभी इफ़ आई एम फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग एनी वन कि प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो जो रट के आया होता है ना, 2 मिनट की स्पीच होती है, राइट फ्रॉम वॉट एवर पर्सन इज इन माई फैमिली से लेके. एंड वेन आई आस्क दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इन अ शॉर्ट फॉर्म, या फिर थोड़ा कुछ अलग करके पूछ लेती हूँ, दैट पर्सन डोंट नो अ वर्ड ऑफ इंग्लिश.
सो आई फील कि तुम जो भी बोल रहे हो कॉन्फिडेंटली बोलो, डजेंट मैटर तुम इंग्लिश में बोल रहे हो किस में बोल रहे हो, हिंदी में आता है, यू शुड बी ट्रांसपेरेंट कि हाँ मुझे इंग्लिश नहीं है कंफर्टेबल, कैन आई स्पीक इन हिंदी. इफ वो एचआर उतना फ्लेक्सिबल होगा देन ऑब्वियसली गिव चांस, एंड नहीं होगा तो फिर यू हैव टू लर्न इंग्लिश, इट विल नॉट मैटर. सो थर्ड थिंग इज द कॉन्फिडेंस फॉर मी. फोर्थ थिंग इज द स्किल्स आई लुक फॉर, कि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ आई एम लुकिंग फॉर पर्टिकुलर थिंग देन आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई वॉन्ट दैट स्किल्स एट एनी कॉस्ट. ओके. एक आधा स्किल मिसिंग है, चलो ठीक है, हम कर सकते हैं, आगे पीछे थोड़ा बहुत सिखा सकते हैं. बट इफ मेजर स्किल्स आर मिसिंग एंड उसके बाद यू आर एक्सपेक्टिंग दैट आई शुड टेक यू बिकॉज यू हैव ओनली मैंशन दैट इन योर रेज्यूमे बट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी. True. And fifth mention obviously English. So yes. Lovely, Isha. Because yes, people are most tend towards this particular things. Ki what exactly HR wants. So definitely, guys, these are the 5 key points which you can keep in your mind while appearing for the interview or any of the interview. Rather, I say you should have these 5 skills before going ahead with the interview. Let's move ahead with the next question, Isha. So basically, Cleany and Skillix Academy, where we are bound to provide industry ready talents. Okay, that is why we update our syllabus as per the industry. We talk with the industry experts, we meet industry experts, we call up industry experts for delivering the sessions, because we want to give best of the best knowledge of the industry to all of the applicants who are already enrolled for our courses. And definitely we are tend towards to give best of the best industry ready candidates to the companies. So let's suppose if we have trained a real good pool of candidates who are top notch with all of these 5 things which you have mentioned, are you able to take them in your company if they successfully fulfill your criteria and your eligibility tests? Sure, if Skillex and Cleany Hunt will provide me such type of candidates, obviously I will take or give them the first priority, because obviously it is going to save our time. It is going to give opportunity to those people who are specialized in that domain, which will help them to get their dream job. And it will also save our time, as we have told you. And yes, we will love to collaborate if this will thing goes well, because एचआरस की टेंशन कम हो रही है, और क्या चाहिए. बिल्कुल ईशा, एंड definitely we are working on this exclusive point only, that we are making sure that all of our students will be getting 100% placement guarantee, just because of one point, that we are connected with the industry and we want to make industry ready talent pool. And definitely support from the companies like yours will be always appreciated, and we welcome about a lot of such companies who are ready with their entire recruitment pool, recruitment requirements, and we are there to fulfill it. Okay, so let's do rapid fire questions. Okay. Miss Isha, so are you ready with that? Yes, Okay. absolutely. Tell me about your fun moment, like during your interview experiences. Okay. So recently I had this a week ago that I took an interview of a fresher BPharm graduate for the position of data processing, that is medical summarizer only. And each and everything went well. Her English was not that good, but I liked her a kind of. Last question was, what are the expectations? Your expectations from the company, job role, and the compensation. So her expectations about the company were good, that whatever they are offering is, I am flexible with it, which is a good sign. Like, she is flexible to learn everything. Talking about the compensation part, I asked her, what are your expectations? She was like, according to market rates. So in just fun, I asked her, what are the market rates? So she was like, I don't know. So Oh my god. so I was like, if you don't know what are the market rate, what Correct. are you expecting exactly? Then she was like, 25 to 30,000. Will it work? So I was like, Oh my shit, god. what is this? So yes, it is a funny type of True. part कि आप बोल रहे हो कि compensation चाहिए according to market rate, but you don't know what the market rate rates. is. That's So, really funny. yes. That's really funny, Isha. Let's move ahead with the second question. That is obviously a HR role which you are performing. So you are screening a lot of candidates. But ये भी हुआ होगा कि आपने भी कई सारे इंटरव्यू दिए होंगे. So what Yes. are your experiences and how many interviews you have given? Rather, I'll ask that. Okay.
I have given 2 interviews. The first one was a disaster for me from my side. Okay. So that funny moment I remember is each and everything again goes well. Talking about the compensation part, the person asked me Yeah. that what are the stipend you are expecting, and as usual I was also having college wala ki हाँ अच्छा मिलता है ऐसे, and I said 15,000. Okay. The person told me to exit and never called me again. So My God, that was horrible. So yes, this is the thing. I also had that type of expectation, and yes, in the second company I joined as an intern. Then I am from that moment after the intern I got promoted as executive. Then I am lead. So yes, promoting day by day. So Wow, yes. lovely, lovely. The third question of mine is, Miss Isha, you know, you might be hiring a lot of candidates. So what is the exact number you're hiring annually? You know, all the freshers which you hire annually, because I'm having Okay. a ready pool of candidates with Yes. me. So what is the So number? approx we can say 60 to 70 per year fresher we hire. My God. Yes. So will you be taking our students for that? Yes, for sure, for sure. Thank you, thank you. And the last one, okay, you have been visited our center over here, which is Clinic and Skillix Academy. How you loved our premises? Okay, I loved it a lot. I will be very frank because I am not that game paglu we can say, but I loved the game zone we have. I am a great foodie, so I got Lovely. to know about the court also. So I loved that also. Each and everything is there. There is library if you want to chill. There is this podcast room. The classrooms are very good, and obviously your guidance is there. So I felt it very good. So Lovely. Thank you. Thank you so much for this rapid fire round. And thank you so much, Miss Isha, for being on yes, this. thank you to you too. Thanks. So, guys, you know, winding up with this particular session, I just would love to say that there are a lot of opportunities available in the market. Only the missing part is whatever skills, whatever confidence, whatever communication skills which is having a gap, that is you just want to, you know, fulfill it up. And as you have heard from Miss Isha, that we have talked on a lot of things over here in this podcast, and we have you know, approached in this way कि जहाँ से आपको पता चले what sort of qualities are very important. You know, I hope this particular podcast will help you to channelize each and everything कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, what actually you know, industry leaders want, what actually HR looks from their point of view. So definitely this podcast may help you to, you know, understand all of these concepts. And again, I would love to thank you, Miss Isha, for this lovely and amazing podcast. And definitely we would be inviting you for such more you know, communication things. We would love to know very more details from you, you know, in future. If we can just collaborate on multiple things, you know, that will help you know, all of the fresh talents to you know, understand the requirements of the company. That will be a really great part. And definitely this podcast of yours will help a lot of fresh graduates. That is what I'm saying. So lovely to have a conversation with you over here. And thank you once again, Miss Isha, for being our honorable guest over here. And we welcome you to Cleaning and Skillix Academy. And we'll see you soon for the further part. Thank you to you Thank too you so for inviting me for the same. And yes, I will love to collaborate for the further things with you. Yes, thank you. Thank you so much, Isha.